I have already discussed the business environmental law, Article 23, 24, 301, 307. I have discussed all this. Na? Yes, sir. Now we have to start FEMA. Any doubt before I proceed to the further? I want again. I'm repeating the same questions to you. Do you have any doubt? No, sir. Okay, I think it's clear to you, na? Yes, sir. Okay, I have already discussed what is FEMA. What act did FEMA replace? What is FERA and when it is passed? FERA means Foreign Exchange Regulation Act, which was passed in the year 1973. It came into effect on January 1, 1974. The resolution was passed in 1973 in the Legislative Assembly Hall, and it came into act in the January 1, 1974. FERA was passed to regulate the financial transaction concerning foreign exchange and securities. FERA is a foreign exchange regulation act. Is it is the is you can say it's just to make a financial transaction with the with the foreign security exchange and all. This law been passed, okay, and FERA was introduced with forex reserve for the country were very low. Okay, FERA was introduced when forex reserves of the country were very low. फेरा उस समय इसको इसको पावर में लाया गया था जब फोरेक्स एक और मतलब क्या था, एक रेगुलेशन एक्ट था रिजर्व कंट्री के लिए। तो उस समय फोरेक्स के माध्यम से जो भी सिक्योरिटी एक्सचेंज या फॉरेन एक्सचेंज होता था फोरेक्स के माध्यम से होता था। लेकिन उस समय फोरेक्स जब इंप्लीमेंट हुआ था, फोरेक्स का लॉज जब पास हुआ था, इट वाज नॉट इनएक्टिंग in such a way, in proper way. Okay, the exchange rate, or you can say the monetary rate was going down, and at that particular point of time the FERA was introduced. Okay, and why was FERA replaced? FERA को क्यों replace किया गया था? These are the short MCQ, these are the short questions. Why was FERA replaced? FERA didn't comply with the post liberations of political of the government. फेरा को इसलिए रिप्लेस किया गया था because post liberation policies of the government was not implementing. मैक्सिमम असेंबली हॉल्स में जितने भी मतलब ऑपोजिशंस थे, दे वर नॉट सपोर्टिंग दिस फेरा foreign exchange regulation act. They doesn't want this foreign exchange regulation acts as because the government, the opposition party thinks that if the FERA introduced in the country, then the exchange rate, then the monetary rate, or the rate of currencies in India will be in downward positions. Okay, it will be in a downward position. That why FERA finally was been replaced. बिकॉज इसलिए फेरा को रिप्लेस किया गया था क्योंकि ऑपोजिशन नहीं चाहता था कि बाहर की करेंसीज यहाँ पर आके बिजनेस सेटअप करे, स्ट्रेटेजीज सेटअप करे। क्योंकि अगर बाहर की एक्सचेंज, फॉरेन मनी यहाँ आ जाता है तो हमारे इंडियन करेंसीज के जितने भी रेट्स है वो फिर गिरने लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप जानते होंगे बिटकॉइंस। I think you have listened the name of a bitcoins. Now government is trying his level best to implement this bitcoins. Okay, आप एप्स डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर ये अंदर ही अंदर सेल आउट हो रहा है, बिटकॉइंस सेल आउट हो रहा है, बिटकॉइंस परचेज हो रहा है। ओके, धीरे धीरे ये मार्केट्स में छा रहा है बिटकॉइंस। बिटकॉइंस अभी तक वैलिड नहीं है इंडियन करेंसीज में। अगर कोई इलीगल तरीके से बिटकॉइन करता है देन ही और शी मे सेंड टू द जेल, इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा उसको। लेकिन अभी कुछ ऐसा पॉलिसीज आया है, कुछ ऐसा एप्स है जिसके माध्यम से आप इसे लीगल तरीके से इसे आप अपना सकते हो, बिटकॉइंस। ओके, द सेम वे द फॉरेक्स रिजर्व्स एक फॉरेन करेंसीज था जो कि इंडिया में इंप्लीमेंट होने वाला था, बट जो ऑपोजिशंस था वो इसी तरह से पाबंदी लगा दिया था जिसकी वजह से ये इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। ठीक है, दैट इज व्हाई फेरा वाज बीन रिप्लेस्ड। व्हाट इज द मेन चेंज ब्रॉट इन फेमा कंपेयर टू फेरा? बता रहा है व्हाट आर द मेन चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आया था फेमा एज कंपेयर टू फेरा। इट मेड ऑल द क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड सिविल ऑफेंसेस। जैसे आप होता है, जैसे बिटकॉइंस बहुत जन होता है इलीगल तरीके से करेंसीज
एक्वायर कर रहा है, ऑनलाइन परचेज कर रहा है, ये एक इलीगल है. दिस इज रियली वेरी इलीगल. एक ड्रग्स की तरह है. इट्स ऑल अबाउट द ड्रग्स, इट्स ऑल अबाउट द गैम्बलिंग. द सेम वे जब फेरा कंपेयर टू जब फेमा को कंपेयर किया गया था फेरा के साथ, तब बहुत सारा क्रिमिनल ऑफेंसेस, सिविल ऑफेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है इस तरह का करेंसीज एक्सचेंज को रोक नहीं पा रहा था, और जिसकी वजह से इंडियन की मॉनेटरी रेट धीरे धीरे डिट्रॉयट हो रहा था. ठीक है. दैट इज वाई फेरा एंड फेमा बोथ आर क्रिमिनल ऑफेंसेस एट दैट टाइम. ओके, इन द ईयर 1974. Now, main features of Foreign Exchange Management Act in 1999. What are the main features of foreign exchange? Number one, it provides the powers to the central government to regulate the flow of payment to and from a person situated outside the country. Okay. पहला है, it gives power to the central government to regulate the flow of payment to and from a person situated outside the country. फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अनुसार गवर्नमेंट अगर हमारे पावर करेंसीज को रेगुलेट करते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट somebody using our currency outside India, then the power will be generated, the government will get its power. ओके. अभी भी अभी भी इंडियन करेंसी डॉलर के हिसाब में बहुत ज्यादा फर्क है. नियर अबाउट 64 रुपीज डिफरेंस बिटवीन डॉलर एंड रुपीज. ओके. पहले इससे 87 रुपीज था, अब 64 या 56, करेंटली अभी 56 या कुछ ऐसा डिफरेंसेस आ रहा है. वाई? बिकॉज उस समय जो था इलीगल तरीके से फेमा, फेरा, फोरेक्स, ये सब जो फॉरेन एक्सचेंजेस था, इसको बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट किया गया था इंडिया में. It was implemented lot in India. That's why the currencies of that's why the Indian currency get deteriorated gradually. अगर दुनिया में देखा जाए सबसे पावरफुल करेंसीज कौन सा है? सबसे पावरफुल करेंसीज होता है अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया. These are all the powerful currencies in the among the world. But if you compare the currencies of Nairobi, Nigeria, West Indies, the currencies, उसका currencies का कोई महत्व नहीं है. पाकिस्तान, बांग्लादेश, if you compare these the currencies, ये बहुत लो है. इसका इनका जो क्वालिटीज है, इनका जो पोजीशंस है, बहुत लो है. लेकिन इंडिया के भी ऐसा सिचुएशन था इन 1974 आफ्टर द इंडिपेंडेंस, बट ग्रेजुअली द फेस ऑफ इंडिया बीन चेंज्ड. Okay, gradually the face of Indian currency get changed gradually. अभी differences 56 रुपीस या 55 रुपीस currently अभी differences चल रहा है. ओके. तो इसका मेन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि अगर गवर्नमेंट हमारे करेंसीज को, कोई भी इंसान बाहर में या फिर इंडिया में रेगुलेट ज्यादा करते हैं, तो हमारे करेंसीज का पावर उतना ही ज्यादा होगा. सपोज समवन स्टेइंग इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आउटसाइड इंडिया, and he or she is using our currencies. In exchange, they are getting the currencies. तो हमारे करेंसीज वहां पर चल रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो हमारे जो पावर है, गवर्नमेंट का जो पावर है, इंडिया को जो स्ट्रेंथ है, डेफिनेटली इट विल गो अपराइज. ओके. दिस इज द नंबर वन मेन फीचर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999. Comes to the next. All the financial transactions concerning foreign securities or exchange cannot be carried out without the approval of FEMA. All transaction must be carried out through authorized person. Okay, without FEMA's, without the approval of FEMA in the Management Act 1999, it cannot be carried out. Okay, without the approval of FEMA, any foreign transactions or any financial transactions in India or outside India cannot be done without FEMA's approval. This was the powerful policies implemented by that time when the government uses these resolutions in the Act 1999. Okay, number third, in the general interest of the public, the government of India can restrict an authorized individual from carrying out foreign exchange deals with the current account. Okay, next comes to the next one. In the general interest of the public, the government of India can restrict an authorized individual from carrying out foreign exchange deals with the current account. अब इसको मैं थोड़ा सा briefly explain करता हूं, because the point is here
but you need to be explained, it should be explained. But when there was no management act, was not been so much powerful in that era, when the Congress was in, मैं मतलब वो नाम लेके ही बता रहा हूँ, आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस पावर में था उस समय। कांग्रेस से ज्यादा पावरफुल कंट्री, मतलब जो गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं था, कोई नहीं था। इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। Okay, so in that era, the what the currencies, what the people used to do, the people used to exchange the money with the other countries. Okay, the countries जैसे नाइजीरिया, नायरोबी, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनके साथ करेंसीज एक्सचेंज करते थे। दे यूज्ड टू करेंस द एक्सचेंज इलीगली। अभी भी आप अगर बांग्लादेश बॉर्डर चले जाते हो, वहां पर बहुत सारे ऐसे स्टैंड्स बना हुआ है। दिस इज अ फैक्ट आई एम टेलिंग यू। ऐसा स्टैंड्स बना हुआ है जो बैठा हुआ है और मनी एक्सचेंज कर रहा है। सपोज समवन इज कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश एंड गेटिंग इट एंट्री इन इंडिया। अब वहां पर जैसे ही एंट्री लेता है, सबसे पहला काम उनका होता है पासपोर्ट चेक करवाना, और जितने भी बांग्लादेशी करेंसीज है उसको इंडियन करेंसीज में कन्वर्ट करना। नाउ ये एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया था। जो भी वो करता था कोई भी चार्जेस ले लेता था। सपोज वो 100 रुपीज, 100 रुपीज, ठीक है, वो लोग भी रुपीज ही बोलते थे, टाका। वो लोग दे यूज बांग्लादेश यूज टू कॉल 100 टाका, TAKA, टाका, and we used to call it a rupees, 100 rupees, okay, and they used to call it as a 100 टाका, 10 टाका, 1000 टाका, they used to call it taka. Okay, now what they used to do, they whenever they used to come to India, and the some people, some organizations are there, they used to charges high rate, okay, without paying any taxes to the government at that time। okay, without paying any particular proper taxes to the government, they are charging high, unauthorized way में वो लोग फॉरेन एक्सचेंज करते थे। जिसकी वजह से ये रूल्स एंड रेगुलेशंस मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया था 1999 में। बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज करते हुए इलीगल तरीके से, मतलब इलीगल तरीके से करते थे, एंड दे आर नॉट पेइंग द प्रॉपर वे ऑफ टैक्सेस एंड ऑल। ओके, आप अगर फॉरेन एक्सचेंज में मनी करते हो, जैसे वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, सपोज समवन इज सेंडिंग सम मनी फ्रॉम अदर कंट्रीज, आप वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर जाते हो या पंजाब एंड सिंध बैंक जाते हो, कुछ कुछ ऐसे बैंक्स है जो इसको एक्सचेंज करते हैं, नॉट एवरी बैंक। वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर और पंजाब और नेशनल सिंध बैंक, ठीक है, ये करते हैं। उसके बाद है HSBC बैंक, ओके, HSBC बैंक जो है बैंक पे, ग्रीनविच बैंक्स, ये भी कलकत्ता में है, ग्रीनविच बैंक्स, HSBC, ओके, हांगकाई शंघाई बैंक्स, these are the few banks in India where they used to exchange the money, okay, and they exchange the money with a taking proper rate of interest, and they are paying a good taxes to the government। जब लॉज नहीं बना था, तब तब ये क्या करते थे, तब ये अपने जो भी मिलता था वो अपने पॉकेट में रख देते थे। दे नॉट इवन पेइंग एनी टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। दैट्स वाई, इसी कारणवश ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया था, एंड दिस वाज implemented in 1999, and after implementing this, it's becoming a giving a fruitful result to the government। ओके, यही है, एंड इट इज जस्ट फॉर द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट्स जस्ट फॉर द जनरल। उस जमाने में इन द 1974 उतना कोई फॉरेनर्स इंडिया विजिट नहीं करते थे, ना ही उतना ही हमारे इंडियंस बाहर में रहते थे। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस ना, इन द ईयर 2010, 12, 15, बहुत सारे इंडियंस, जैसे नाइजीरिया में, नायरोबीज में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बहुत ज्यादा इंडियंस वहां पर स्टे करने लगे। and whenever they used to come to the India na, they exchange the money in the bank। एक प्रोविजन बन गया था इन द आफ्टर 1999, एक प्रोविजन बन गया था कि आप अगर मनी एक्सचेंज करना चाहते हो, देन स्पेसिफिक प्लेसेस आर देयर, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड specific places are there where you need to go and exchange your money। in lieu of that you need to pay some little amount of taxes to the government। बट ये पहले नहीं था। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट। ये सिंपल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट ने इतने सारे इनिशिएटिव लिए थे उस जमाने में। इज इट क्लियर टू यू मधुस्मिता? पॉइंट नंबर 3। okay, number 4 comes to the number 4 point, empowers the Reserve Bank of India to place the restrictions on transactions for capital account even if it is
carried out via an authorized individual. What is the point? It empowers Reserve Bank of India to place restrictions on transactions from capital account, even if it is carried out via authorized individual, और भी इसे पावरफुल पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए और पावरफुल बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी इन्वॉल्व किया गया था. इससे पहले रिजर्व बैंक इन्वॉल्व नहीं था, बट नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अंडर दिस policies. Under these policies, Reserve Bank of India will going to look after what type of transaction is there, whether the taxes are paying on time or not, what is the rate of exchange rate of interest. Suppose someone is exchanging $100, 100 euros, 100 rubles. Okay, what are the rate, Indian currencies rate, how much they are charging for that particular exchange and all. Now Reserve Bank of India looking all this transactions matter. Okay, that's why after 1999, Reserve Bank of India is also involved in this monetary transactions policies enacted 1999. Okay. Number 5, as per this act, Indians residing in India have the permissions to conduct a foreign exchange, foreign security transactions, or the right to hold or to own immovable property in a foreign country in case security, property, or currency which was acquired or owned when the individual was based outside the country, or when they inherit the property from individuals staying outside the country. Okay, now after implementing these policies, now if normal people or the Indians residing in India or outside the India, they really feel very relaxed. Okay, they are now not facing any trouble. They are not facing any discrepancies while exchanging the money or transactions in money, because the money transaction is now highly been secured. The security transaction is highly been done in a processed way, and they can move, suppose some immovable properties are there, now they want to move the properties to the other states or other country. Okay, it can easily be done. Okay, it can easily be done, but before this 1999, it was really very tough to do all these transactions, do all this immovable property. But after 99, it was cleared. Okay, it was really very cleared. Now every citizens of India residing in Indians or outside the Indians, very much clear, having the permissions to do their transactions clearly, to or just they want to move their immovable properties to other state, it is very clearly they can move to their property into some other state. And the currency which was acquired or owned when the individual was based outside the country, or when they inherit the property from the individual staying outside the country. अगर आप कंट्रीज के अंदर में रहते हो या बाहर रहते हो, आप अगर कुछ भी एक्सचेंज करना चाहते हो, इन रिटर्न ऑफ दैट इट वाज रियली क्लियर दैट आप उस एक्सचेंज रेट ऑफ इंटरेस्ट में, जितना ही एक्सचेंज रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, उतना ही एक्सचेंज रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पेड करके अपना जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है एक्सचेंज करना चाहते हो, वो इजीली आप कर सकते हो. ये फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाया है in due course of time. So these are the 5 important main features of Foreign Exchange Management Act in 1999. Is it clear to you, students? Is it clear to you? Hello? Yes, sir. Any doubt? Please tell me if you have any doubt. Okay. Can I go to the next? Structure of FEMA. Very important. Yes, sir. Okay. Structure of FEMA. Now, head office of FEMA is also known as enforcement director. ये सब तो आपको याद करना पड़ेगा. These are the things you need to remember. I don't think some things are there which is I need to explain it to you. स्ट्रक्चर ऑफ फेमा कैसा है? हेड ऑफिस ऑफ फेमा इज ऑल्सो नोन एज एनफोर्समेंट डायरेक्टर. मैंने इससे पहले आपको बताया था ना, ईडी. ईडी का फुल फॉर्म होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टर. हेडेड बाय द डायरेक्टर, इज लोकेटेड इन द न्यू दिल्ली ऑफिस. इसका जो हेड ऑफिस होता है न्यू दिल्ली से होता है, जो भी ऑपरेशंस होता है न्यू दिल्ली ऑपरेशंस करता है. There are 5 zonal offices in Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, and Jalandhar. Each office is headed by the deputy director.
तो डायरेक्टर है वो दिल्ली में बैठा हुआ, इसका 5 जोन्स बना हुआ है, जो जोन 5 जोन्स है, जिसमें दिल्ली मुंबई कैपिटल, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई एंड जलंधर, इसका 5 डेप्यूटी जोनल बना हुआ है, 5 जोन्स है, और जिसके अंडर में ये डिप्टी डायरेक्टर जो है इनको ऑब्जर्व करते हैं, अंडर डिप्टी हेडेड बाय द डिप्टी डायरेक्टर. Every 5 zones are further divided into 7 sub-zonal offices. उसके बाद every 5 zones, जितने भी 5 जोन है, वो फर्दर 7 सब-जोन्स डिवाइड किया हुआ है, हेडेड बाय द असिस्टेंट डायरेक्टर. देखो कैसे रैंक बना हुआ है, डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर. डायरेक्टर के अंडर में 1 जोन है, और उसके बाद 5 जोनल्स जो है डेप्यूटी डायरेक्टर के अंडर में है, 7 सब जोनल्स जो है वो सब डिवाइडेड है अंडर असिस्टेंट डायरेक्टर. ओके, एंड 5 फील्ड यूनिट हेडेड बाय चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर. और 5 जो सबसे फील्ड ऑफिसर होते हैं, जो फील्ड में रह के ये सब ऑब्जर्व करते हैं, काम करते हैं, उसका चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स जो है डेपुट किया गया है. तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मनी अकाउंटेबिलिटी, फेमा. Okay, this is the structure of FEMA. You need to get remembered this because these are the multiple choice of questions you will going to get. In multiple choice of questions you will going to get, where is the head office of FEMA, what are the, who is the director headed by, who is the enforcement director headed by, आपको आंसर देना पड़ेगा. व्हाट आर द 5 जोन्स ऑफिसेस, वेयर आर द 5 जोनल ऑफिसेस, आपको आंसर देना पड़ेगा. हु इज द ऑफिस इन चार्ज of this 5 zonal offices, deputy director. So these are the multiple choice, these are the questions related to FEMA structure will you get, you will going to get in you can say in multiple choice of questions. Okay, is it clear? Now comes to the next, which is very much important, Consumer Protection Act, CPA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. ये जो है आजकल बहुत ज्यादा इसका मतलब स्ट्रेस, मतलब इसका बहुत ज्यादा आप इसका ओरिजिनलिटी, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव आप देखोगे. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको बताएगा, इफ समवन इज नॉट पेइंग ए करेक्ट बिल, यू आर परचेजिंग एनी गुड्स from Septipin to any needle. Suppose Septipin, you are purchasing from Septipin to aeroplane. The government has and provisions that you need to ask every shop owner from where you are purchasing any goods, that the shop owner must pay the original bill. Because if the payment, you are doing any payment and the shop owner is not paying you, giving you any bill, it means that the whole money whichever you are paying for whatever goods you are purchasing from that particular shop, that entire money whichever you are paying is going to his own pocket. Okay, that's why consumer, according to Consumer Protection Act or CPA, consumer need permanent whatever you are purchasing from Septipin Your to voice is aeroplane. This is the first consumer law that I'm telling you. Yes? क्या हुआ मधुस्मिता? Any doubt? no, sir. In between, Hello? your voice was not clear. Which one is not clear? Consumer Protection Act. Mm, sir, actually, your voice was not clear. ओके, कौन सा पार्ट में वॉइस क्लियर नहीं था बताओ, मैं फिर से दोबारा उसे स्ट्रक्चर ऑफ रिपीट फेमा, कर देता हूँ. हाँ सर, स्ट्रक्चर ऑफ फेमा तक क्लियर था, उसके बाद से सर. उसके बाद तो अभी मैंने स्टार्ट किया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? सबसे पहला रूल्स जो है अभी, वो तो पहला अभी तो मैं पढ़ाऊंगा जो उसमें लिखा हुआ है, लेकिन अभी जो नया रूल बना है उसमें ये बताया गया है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सबसे ज्यादा अभी चर्चित चीज है. According to Consumer Protection Act, whatever the goods you are purchasing from any shop, suppose for example from Septipin to aeroplane, if you are purchasing, you need to ask, you need to request. It is not a request. I use the wrong word, request. You need to order or you need to ask for a permanent particular bill.
whatever you are purchasing. Suppose if you're not asking for any bill, whatever you purchase from the shop, you are paying the money to the shop owner. And if the shop owner is not paying any bill, that means the whole money, whatever you have paid for whatever goods you have consumed, it will directly go to his own pocket. द गवर्नमेंट, वो जो पैसा आपने दिए है उसका टैक्स जो है गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से जो भी रोड आपको, जो भी आपको फैसिलिटीज गवर्नमेंट से मिलना चाहिए, वो आप वंचित रह जाते हो, मिलते नहीं हो। और यहीं पर एनफोर्समेंट डायरेक्टर काम करता है। कोई भी टैक्स का घपला, कोई भी टैक्स की चोरी, टाइम में पैसा पेड ना करना, टैक्स की मतलब में अनलॉफुल तरीके से पैसा इनकम करना, ये सब जो ऑब्जर्वेशन है ये एनफोर्समेंट डायरेक्टर करते हैं, खोद के निकालते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टर खोद के निकालते हैं कहां आप पैसा छुपाए हो। आप थोड़ा सा न्यूज देखिए, एबीपी न्यूज, आज तक, उसमें देखिए वेस्ट बंगाल का हालत, नेता मंत्री के घर से पैसा निकल रहा है, कौन कर रहा है? एनफोर्समेंट डायरेक्टर इसको लिया है, कर रहा है ये सब चीज। उनका काम है जितना पैसा उन्होंने अनलॉफुल तरीके से रखा हुआ है वो सब निकाल के। अभी रिसेंटली एक न्यूज आया था ना, किसी मैं आपको जस्ट फॉर समझाने के लिए एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, इट इज, मुझे कोई ऐसा ये नहीं है। रिसेंट कोई लीडर के घर में, कोई एक मतलब कोई पार्टी के लीडर के घर से झारग्राम में ये न्यूज आया है, 300 करोड़ रुपया मिला है, 300 करोड़। और जब एनफोर्समेंट डायरेक्टर वहां रेड करने के लिए गया था तो मशीन्स कम पड़ गया था, काउंटिंग मशीन्स जो होता है वो कम पड़ गया था। तो ये सारा जो काम होता है ना, जो भी इंसान अनलॉफुल तरीके से पैसे रखते हैं, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टर वहां पर जाके ये सब रेड करते हैं। एम आई क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? ये थोड़ा सा मैंने आपको जनरल नॉलेज बता दिया कि आपको कोई पूछेगा व्हाट इज द वर्क ऑफ एन एनफोर्समेंट डायरेक्टर, देन यू कैन आंसर टू देम। ओके, एम आई ऑडिएबल नाउ? Yes, sir. You're ओके, audible. समझ में आया अभी जो मैंने समझाया? Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट चले जाते हैं कंज्यूमर लॉ, जो हम पढ़ा रहे थे। आई वॉज गोइंग विद द कंज्यूमर लॉ, आई नीड टू एक्सप्लेन दिस थिंग। ओके, कंज्यूमर लॉ, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2000, जिसे फुल नेम कोपा कहते हैं, कोपरा, COPRA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2000 is an act of the Parliament of India enacted in 1986 to protect the interest of consumers in India. Madhusmita, I am telling you that whenever you are going, whenever you are on any day, whenever you're going to have appear for this paper, na, please read this lines, entire chapter line wise. Okay, please read the chapter line wise, because lot of multiple choice questions or objective type of questions will going to come. देखो, जैसे when the consumer act enacted in India, what will be the answer? The consumer act enacted in India in the year 1986. Okay, what is the main motto of consumer protection act? Just to protect the interest of the consumers in India, just to protect the interest of the consumers in India, and just to stop the illegal transactions, or just to yes, just to stop the illegal transactions that made by the consumers without having proper knowledge. Okay, this was the main motto, or this was the main consent of creating this consumer protection act. It is replaced by the Consumer Protection Act 2019. It is made for the establishment of consumer councils and other authorities for the settlement of consumers' grievances and matters connected there within it. देखो, 1986 जब हम लोग जन्म नहीं लिए थे तब ये बन गया था, लेकिन इंप्लीमेंट सही तरह से नहीं हो रहा था। लेकिन 2019, इतने सालों बाद जाके इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ है, कंज्यूमर को धीरे धीरे अवेयर करवा जा रहा है।
2019, मतलब सोचो, बिफोर कोरोना पीरियड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हम जैसे साधारण कस्टमर्स को समझाया जा रहा है। ठीक है, इससे पहले नहीं था, ये था, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था, हमको जानकारी था ही नहीं उतना। जो भी रेट लगाता था, जो भी चार्जेस हमसे चार्जेस करता था, अपने मनमर्जी की तरफ से करता था। इसका दाम ये है, आपको लेना पड़ेगा, इसका कोई प्रॉपर फिक्स्ड रूल्स या लॉस था ही नहीं कि आप एक गुड्स में इतना ही टैग, परचेस टैग लगा सकते हो, इतना ही एमआरपी पे आपको दाम देना है। ये सब हमें पता ही नहीं था। जो भी दुकानदार हमसे जो भी दाम मांगता था, हम दे देते थे। हमको पता ही नहीं था एमआरपी क्या है। एमआरपी के ऊपर गवर्नमेंट का कुछ टैक्सेस होता है। अगर हम एमआरपी कायदे से पैसे देते हैं कुछ भी गुड्स खरीदने से, तो इसका क्या होता है, इसका 2% 1% टैक्स जो है गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। और वही टैक्स हमें फिर बहुत सारा मतलब जैसे अच्छे रोड, स्ट्रीट लाइट्स, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर वाटर सिस्टम, ये प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये सब हमें मिलता है, फैसिलिटीज मिलता है। तो ये हमें पता नहीं था बिफोर 2018। इन 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बड़ी जोरदार तरीके से लाया गया था। ठीक है, it is made for the establishment of consumer councils and other authorities for the settlement of the consumer grievances and matters connected therewith. The act was passed in assembly in 1986 and come into forces in December 24, 1986. The statute of the right was made before this Copra Act. Now, what are the significance of this act? इसमें समझाने लायक कुछ नहीं था। इसमें सिर्फ सिंपल डेट मेंशन किया गया है, 1986 को इंप्लीमेंट किया गया था। 24 दिसंबर 1986 को इसको लॉ पास किया गया था, लेकिन इसका प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन आफ्टर 2019 में हुआ था। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्ट? Okay, now what is the significance of this act? This act regarded as the Magna Carta in the field of consumer protection for checking the unfair trade practices, defects in good, deficiencies in services as far as India is concerned. Look at the new word, Madhusmita. अगर कॉपी पेन है तो लिख लीजिए, मांगना कार्टा, मैंगना, MAGNACARTA। ये एक्ट को, जो कंज्यूमर एक्ट को एक और नाम दिया गया था इन द ईयर 1986, कॉपी में लिख लीजिए, मैग्ना कार्टा, MAGNACARTA, मैग्ना कार्टा, वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्ना कार्टा। ओके, एम आई क्लियर? एम आई Yes, ऑडिएबल? sir. Yes, sir. Please, if you have a pen and paper with you, write it down, Yes, because sir. this is very important. This act is regarded as Magna Carta. Magna Carta क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को एक और नाम दिया गया था, मैग्ना कार्टा, MAGNACARTA। आपके पास अगर जो नोट्स है जो मैम ने मुझे प्रोवाइड किया, आपके पास अगर है तो उस अंडरलाइन कर लीजिए या फिर लिख लीजिए कॉपी में। दिस आर ऑल गोइंग टू कम फॉर योर एग्जामिनेशन। Now, what is the role and responsibilities of this Magna Carta or Consumer Protection Act? Just to make aware of the people, not to do any illegal practices, not to do any trade illegal practices, defects in goods, deficiencies in services. As far as India is concerned, these had led to the establishment of widespread network of consumer forum and appellate courts all over India. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या मैग्ना कार्टा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल शॉपिंग मॉल में होता है। सपोज फॉर एग्जांपल, आप शॉपिंग मॉल, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एनी शॉपिंग मॉल एंड इफ यू आर परचेजिंग एनीथिंग, आप इसका सबसे अच्छा देखिएगा कितने लॉफुल तरीके से ये लोग बिल्स पेड करते हैं, बिल्स देते हैं। ठीक है, दे आर चार्जिंग प्रॉपर, मतलब दे आर चार्जिंग प्रॉपर मनीज विद फ्रॉम यू। You just go to any shopping mall, just buy any goods. Look at the responsibilities of a PM authorities, sorry, not PM authorities, shopping mall authorities or executives, how they are behaving with the customers and what type of goods they are providing to the customers.
And okay, how much they charges from you, that also mentioned there. What is the MRP on that particular goods, that is also mentioned. How much you have saved if you're purchasing that good, that is also mentioned over there. अब यही चीज तुम एग्जामिन करने के लिए एक साक्षी बाजार के कोई टेम्पोररी रेडीमेड शॉप में चले जाओ और कुछ कपड़े आप खरीद के लाओ, आप सिर्फ पैसे दे के आते हो, कपड़े लेके आते हो, पैसे दे के आते हो, आपके पास ना कोई बिल होता है, ना कोई आप कभी पूछते हो कि भाई साहब इसका क्या बिल है, क्या रेट है इसका, आपने कितने चार्जेस किए हैं, ये कब का है, देख लीजिए। दिस इज द डिफरेंस। ओके, अब जब से ये शॉपिंग मॉल्स आया है ना, तब से ही दुकानदारों का बिजनेस बहुत हद तक रेक्टिफाइड हो गया है, because nowadays consumers are very much aware of these things, okay, of this magna carta, defect good, deficiencies in good, unlawful goods, okay, not behaving with the consumer। आप अगर कंज्यूमर फोरम में जाके आप कोई भी शॉपिंग्स या कोई भी मॉल या कोई भी दुकान के ऊपर केस कर सकते हो, तो तुरंत उस केस को फिर सिविल कोर्ट में खींचा जाएगा, and they will drag to the court on the basis of your complaint। This is Consumer Protection Law Act, very powerful act। Okay, so you need to remember that Magna Carta is nothing, it's simply related to Consumer Protection Act। Okay, so don't get confused whenever you will going to get in the question, suppose you will going to get the questions, don't get confused that what is the difference between Magna Carta and Consumer Protection Act। Okay, it's very clearly mentioned that Magna Carta in the field of consumer protection for checking unfair trade practices, defect in goods and deficiencies in services as far as India is concerned। Okay, this much will be your answer। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप लिख लीजिए या फिर मार्क कर लीजिए। नाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, नेक्स्ट कम टू द 2.4 consumer protection council। what is consumer protection council? Consumer protection council are established as national, state and district level to increase consumer awareness। consumer protection council क्या है? consumer awareness को बढ़ाने के लिए consumer protection council है। ठीक है, ये कहां कहां सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड और इस्टेब्लिश्ड एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, जैसे सिंहभूम एक डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट सिंहभूम एक डिस्ट्रिक्ट है, सरायकेला खारसुआ एक डिस्ट्रिक्ट है, इसमें आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या कंज्यूमर काउंसिल मिल जाएगा। आप अगर कहीं नेशनल में चले जाते हो, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, या स्टेट में चले जाते हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये पांचों जगह, ये तीनों जगह पर ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बना हुआ है। जस्ट टू मेक, इसका काम क्या है? जस्ट टू मेक द कंज्यूमर अवेयरनेस ऑफ दिस। ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्ना कार्टा एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल? सिंपल डिफरेंस। मैग्ना कार्टा जो है आपकी डेफिशिएंसीज, इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस, डिफेक्ट्स इन गुड्स, डेफिशिएंसीज इन सर्विसेज, ये मैग्ना कार्टा देखते हैं, ये मैग्ना कार्टा लॉ बनता है। और लेकिन कंज्यूमर को अवेयरनेस करने के लिए कौन सा लॉ है? कंज्यूमर को अवेयरनेस करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल लॉ बना गया है। ठीक है, ये कहां कहां बनता है? ये डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पे बनता है। इज इट क्लियर नाउ? सर, हाँ, सर एक बार आप फिर से रिपीट कीजिए ना, वो जो आपने एक की डिफरेंस बताया ना दोनों के बीच में, वो आप रिपीट कीजिए, मैं एक्चुअली नोट डाउन कर रही थी। ओके, यू शुड नो। में लिखो, आर यू राइटिंग? कैन आई डिटेक्ट? यस सर। राइट इट डाउन। Make a heading, significance of Magna Carta, write it down, significance of Magna Carta। should I spell Magna Carta? MAGNACARTA, MAGNACARTA, significance of Magna Carta, डॉट डॉट, उसके बाद आंसर लिखो। नंबर 1, whenever you are writing, Madhusmita, please switch on the mic
and repeat with me. Then I can understand that how far you have completed. Okay, sir. Significance of Magna Carta. Write it down. Number one, checking unfair trade practices. Number one point, checking unfair trade practices. Checking unfair trade practices. Tell me when if you complete. Yes, sir. Checking. Okay. Number two, defects in goods. Defects in goods. Defects in goods. Defects in goods. Completed. Yes, sir. Number third, deficiencies in services. Deficiencies in services. Yes, sir. These are the significance of this act. मैग्ना कार्टा का ये मेन 3 सिग्निफिकेंस है. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. कम टू द नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. Yes, sir. Write it down. Consumer protection councils are established at the Yes, sir. national, state and district level. इसका कहां यूटिलाइजेशन है? नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. Yes, sir. Okay. Now what is the significance of consumer protection council? लिख लो. just to increase consumer awareness. Just to increase consumer awareness. Yes, sir. Yes, sir. Done. हो गया. Yes, sir. देखो, पढ़ के देखो, डिफरेंस पता चल रहा है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. मैग्ना कार्टा का मतलब कंज्यूमर को अवेयरनेस करना नहीं होता है. मैग्ना कार्टा सिर्फ 3 चीजों पर काम करता है: डेफिशिएंसीज इन ट्रेड, डेफिशिएंसीज इन गुड्स एंड डेफिशिएंसीज इन व्हाट यू कैन से डिफेक्ट्स इन गुड. ये 3 पे मैग्ना कार्टा काम करते हैं. अगर आप कोई दुकानदार आपको डिफेक्ट गुड दे दिया है और वो रिप्लेस नहीं करना चाहता है, देन यू कैन कंज्यूमर फोरम में जाके आप उनके अगेंस्ट में, उस गुड्स के अगेंस्ट में आप केस कर सकते हो सिविल कोर्ट में. और द शॉप ओनर विल हैव, मतलब यू हैव द राइट टू गेट पेड. आपको जितना बनता है वो पैसा तो मिलेगा ही, प्लस उनको पेनल्टी भर के आपको पैसा देना पड़ेगा. इतना पावरफुल है कंज्यूमर एक्ट. मैग्ना कार्टा इज सो पावरफुल. So, sir, the Consumer Protection Act, यही है actually मैग्ना कार्टा. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में आता है मैग्ना कार्टा. उसी के अंदर में आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. मधुस्मिता, प्लीज, आई एम यूजिंग द वर्ड प्लीज, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक बिल है जो 1986 में पास किया गया था. Okay, sir. ठीक है. 2019 में इंप्लीमेंट हुआ था. ठीक है. मतलब और बढ़िया इंप्लीमेंट का मतलब क्या है? उस जमाने में इंप्लीमेंट हुआ था, लेकिन 2019 में बिग स्केल में इसे इंप्लीमेंट कर किया गया था. कैसे? लॉट ऑफ शॉपिंग मॉल्स. जब से शॉपिंग मॉल्स आया है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो स्टेजेस है, लेवल है, वो ज्यादा बढ़ गया था. अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के अंदर में आता है मैग्ना कार्टा एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. एम आई क्लियर? Yes, sir. एकदम क्लियर है. Yes, sir. चलिए, ठीक है. नाउ नेक्स्ट 2.4.1,
वेरियस कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, वेरियस कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस में क्या लिखा है, टू इंक्रीज द अवेयरनेस, just to increase the awareness of the consumers, there are many consumer organizations and NGOs that has been established. धीरे धीरे lot of NGOs, non government organization, full form जानते हो NGOs का, non government organization, okay, which are not related to any governments, they are called NGOs, established हुआ था. कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, CGSI, ये एक नया कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया. यू विल गोइंग टू गेट द क्वेश्चंस, नेम फ्यू और नेम वेरियस कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश्ड. तो सबसे नंबर 1 नाम है कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, CGSI was the first consumer organization established in India in 1966. देखो ये सब कितने पहले आ गया था. सबसे पहला जो था वेरियस कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी इन इंडिया, CGSI, which was established in India in the year 1966. It was followed by many others such as Consumer Education and Research Center, जो कि गुजरात में है. नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये तो आज भी है. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये क्वालिटीज को चेक करते हैं, क्वालिटीज को मेजर करते हैं, क्या क्वालिटीज के गुड्स आप कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहे हो, इसीलिए इसका नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. मिठाई के दुकान में जब आप मिठाई लेने जाते हो तो देखिएगा दुकान में जाके एक सर्टिफिकेट बना हुआ रहता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. वो पैरामीटर्स चेक करते हैं, कितना अच्छा क्वालिटी स्वीट्स यू आर गिविंग टू द कस्टमर्स, व्हाट इज द लेवल ऑफ प्यूरिटीज यू आर प्रोवाइडिंग टू द कंज्यूमर्स. सबसे ज्यादा इसका यूटिलाइजेशन मिल्क में होता है, अमूल, मदर डेयरी, लॉट ऑफ मिल्क कंपनीज आर देयर. इसका पैरामीटर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टेस्ट पास करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो अमूल कंपनीज हो या फिर कोई भी स्वीट मार्ट हो या फिर कोई भी फ्रूट प्रोडक्शंस हो, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट अगर पास नहीं करता है तो उसका दुकान का जो लाइसेंस है इट विल बी गेट कैंसल्ड. दूसरा ही दिन पेपर में पब्लिश हो जाता है कि प्लीज डोंट परचेज एनी गुड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर शॉप. इज इट क्लियर? यस सर. ओके, द नेक्स्ट और क्या क्या आया था नेम, फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है. नेक्स्ट है मुंबई ग्राहक पंचायत. नेक्स्ट है कंज्यूमर वॉइस जो कि न्यू दिल्ली में है. लीगल एड सोसाइटी कोलकाता में है. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, ये भी है, बना हुआ है ऑल ओवर इंडिया में. द कंज्यूमर आई इन इंडिया, ये भी है. United India Consumer Associations. So these are the few various consumers organizations in India currently present in India. 1966 में जो पहला बना था कंज्यूमर गाइडेंस ऑफ सोसाइटी इन इंडिया, शायद ये उठ गया है, लेकिन उसके बाद जो भी आया है वेरियस कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस जो आया है इस ये अभी भी है. तमिलनाडु में तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फेडरल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इन तमिलनाडु. So much strict, the government is so much strict with this organizations. Okay na, suppose any fault they are finding in any goods na, तुरंत they cancel the license. So strict. एक न्यूज आया था, आप लोग न्यूज देखते हो कि नहीं मुझे पता नहीं, एक न्यूज आया था कुछ मीट्स जो है, जो जैसे कुछ मीट होता है, आप जानते हो कि तमिलनाडु से सबसे ज्यादा मछली कंज्यूम होता है. ठीक है, साउथ इंडिया का जो मछली होता है आप लोग जो है वो ऑल ओवर इंडिया में आता है, कैलकाटा में आता है, साक्षी में जमशेदपुर में आता है, झारखंड में आता है, बहुत सारे स्टेट्स में, ऑल ओवर द स्टेट. आंध्र प्रदेश की मछलियां जो है ये यहाँ पर आता है. तो एक बार एक ऐसा सिचुएशन आया था कि कुछ जो मछलियां आया था उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल्स था. केमिकल्स इसलिए रखा जाता है, बाई रोड ट्रांसपोर्ट लोग आता है
तो उतना दिन प्रिजर्व करने रखने के लिए दे यूज केमिकल्स, ओके। बट द बट दे आर अलाउड, एक स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि इतना स्टैंड मतलब इतना केमिकल आप मछली में मिला सकते हो, बिकॉज वो कंज्यूम करता है ना इंसान। ज्यादा होगा तो फिर वो डिफेक्ट हो जाएगा, या फिर मछली सड़ जाएगा, या फिर अगर हम उस तरह का केमिकल वाला मछली खाएंगे तो हमें बीमार हो जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे ना। तो ये घटना है, एक बार हुआ था, तो जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश की मतलब ये ज्यादा केमिकल्स मिला हुआ मछली ऑल ओवर द स्टेट, मैक्सिमम स्टेट में आया था। तो कंज्यूमर फोरम में जितने भी स्टेट ने ये मतलब जितने भी स्टेट थे एक साथ उस मतलब कंपनी के अगेंस्ट में जहां से ये मछली एक्सपोर्ट हो गया था आंध्र प्रदेश में, वो कंप्लेन कर दिया था फोरम में, कंज्यूमर फोरम में। तमिलनाडु ने पूरा कंसाइनमेंट नॉट ओनली कैंसिल किया, बट दे स्टॉप नियर अबाउट 2 years ऑफ कंसाइनमेंट, दे कैंसिल कंटिन्यूअस 2 years ऑफ कंसाइनमेंट। वो 2 साल के लिए पूरा बैन कर दिया गया था उस कंसाइनमेंट को। दे आर सो स्ट्रिक्ट तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु पुलिस, तमिलनाडु कंज्यूमर एक्ट फोरम इज सो स्ट्रिक्ट दैट अगर उनको कुछ भी भनक मिल जाता है दैट दीज आर द थिंग्स गोइंग हैपन, ओके ना, तुरंत कार्रवाई होता है और वो टोटल बैन कर देते हैं। not only for 5 or 6 days or 1 week or 1 month or 2 months, near about the years and years the ban. Okay, that's why the government in Tamil Nadu organization is really, really very tough. Am I clear? Hello, is it clear? Yes, sir. Okay, any doubt? No, sir. ठीक है, कल हम कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज के बारे में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज के बारे में कल हम लोग यहां से डिस्कशन करेंगे। प्लीज टेल मी, हमको थोड़ा सा याद दिला देना, 2.5 कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज, ओके। Yes, sir. थैंक यू।